Bulldozers have been a common sight in different parts of the country in recent days. Several states and municipal corporations within them have been carrying out anti-encroachment drives. This is not a new development, but what sets some of the recent instances apart are that they're widely perceived to be retributive action against rioters who participated in clashes between Hindus and Muslims during Ram Navami and Hanuman Jayanti. The legality of this action has been questioned, as has the sweeping manner in which it has been done. Allegations of selective targeting along religious lines have also been levelled. चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। चलाओ बुलडोजर, बताओ अपनी ईमानदारी को, तुम इतने हिम्मत वाले हो तो तुम नहीं चलाओगे उसके घर के ऊपर क्योंकि वो टेनी उसका नाम है। अहमद का होगा घर, तुम तोड़ दोगे अहमद का। यही तुम्हारी तरफदारी है, यही तुम्हारी बायसनेस है। चैलेंज कर रहा हूं, चलाओ उसके घर तोड़ो, चलो बुलडोजर लेकर के चलाओ उसके घर पे। नहीं चलाओगे तुम बुलडोजर, फूल बरसाओगे उसके ऊपर तुम लोग। मगर एक गरीब बच्ची जो बेचैनी के आलम में पत्थर फेंकी तो उसका घर तोड़ दिया आपने। एक की बेल सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर दी मगर उसका घर आबाद है। एक गरीब का घर आपने बर्बाद कर दिया। Karoli in Rajasthan, Khargone in Madhya Pradesh, Khambat in Gujarat, Jahangirpuri in Delhi, Nellore in Andhra Pradesh were just some of the places that witnessed serious religious tension when Ram Navami and Hanuman Jayanti processions were taken out. On the 11th of April, bulldozers rolled into Khargone. On that day alone, 45 demolitions were carried out in 4 different areas. The officials in charge said that this decision had been taken against illegal encroachments after stone pelting had been reported from the very areas. On the other hand, there were also claims from the administration that the drive wasn't targeted at any one community. नवमी के मौके पर तालाब चौक पर हिंसा का पहला जो पत्थर फेंका गया, उस पहले पत्थर ने पूरे शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। और इस वक्त हम संजय नगर इलाके में हैं। ये अब तो सफाई कर दी गई है और असेसमेंट भी कर लिया गया है। डीएम 2-3 बार यहाँ पर घूम कर गई हैं। इन दुकानों घरों को यहाँ लाइन से जो लगे हुए हैं, यह घर बिका हुए लिखा हुआ है आगे, इन तमाम घरों को आग लगा दी गई, दुकानों को आग लगा दी गई। एक दुकान और मैं आपको दिखा दूं कि जो दंगाई थे उन्होंने किस कदर कहर बरपाया है। ये जो दुकान है माँ किराना, उसको भी पूरी तरह से जलाकर खाक कर दिया गया है। ये देखिए आप, यहाँ ये दुकान है जहाँ कुछ उर्दू की किताबें भी पड़ी हुई हैं। आप देखिए यहाँ दोनों मकानों पर लिखा हुआ है कि यह घर बिकाऊ है और इन घरों में भी आग की लपटें पहुंची। यहाँ देखते हैं और आगे कैमरामैन को कहूंगा कि आगे आके दिखाएं। ये बिस्तर जला दिए गए, ये कुर्सियां, आधा दर्जन से ज्यादा कुर्सियों का ढेर लगे हैं जो अब पूरी तरह से पिघल कर जल कर खाक हो चुकी हैं। यह मकान बिकाऊ है। दरवाजा टूटकर बाहर हो चुका है, जैसे तैसे एक ओट बना रखी है चद्दर की, ये पूरा दरवाजा तोड़ दिया गया। ये देखिए आप, दंगाइयों की जो हरकत थी उसका नतीजा देखिए। अब ये 3 मकान इनका कहना है कि दूसरे समुदाय के हैं, लेकिन इन 3 मकानों को छोड़कर चौथा मकान फिर से दूसरे समुदाय का आ गया, तो वहां देखिए उसको भी जलाकर खाक कर दिया गया है। पत्थर फेंकने वाले भूल गए कि ये मध्य प्रदेश है और जहां से पत्थर आए हैं वो घर अब पत्थर के मलबों में तब्दील हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ शांति भंग हम किसी को भी नहीं करने देंगे। 77 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं और तह तक हम आज पहुंच जाएंगे। ये जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल है ना, ये वो है। राहुल गांधी सबसे पहले गए थे, आपने देखा होगा, नारे लगे थे जेएनयू। एक ट्वीट नहीं आया करौली की घटना पे, उनकी सरकार थी कांग्रेस की, एक ट्वीट नहीं आया आज तक। एक बार निंदा नहीं की उन्होंने। ये वही क्रोनोलॉजी चली आ रही है। ये 5 राज्यों की जो हार है ना, वो उकसाने का काम कर रही। कैसे शांति देश की भंग हो, सिर्फ एक ही दिशा में बढ़ रहा है इसका ध्यान। ये चोट कैसे लगी आपको? ये चोट है नहीं, हमारे यहाँ सब जैसे धांधल करके पत्थर मार रहे थे, बहुत सारे लोग थे। अपन तो दरवाजा लगाया था, मैंने क्या मेरी छोरी के घर में घुस जाएंगे, कौन है। जो मैं दरवाजा खोला उसे उन्होंने तलवार मारी। मैंने ऐसी पकड़ी,
पकड़ी तो ये उंगलियां सब हाथ में लगी, दूसरी मारी तो ये सब जबाड़ा फूट गया। अभी तक हम लोगों ने जितने वीडियो फुटेज मिले हैं या जो घटनाएं हुई उनमें कुल 34 FIRs हैं और 121 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है, दबिश चल रही है, सर्चिंग तलाशी भी चल रही है। सर आरोप ये लग रहे हैं एक तरफा कार्रवाई तो नहीं हो रही है कि मुस्लिम वर्ग पर ही कार्रवाई हो रही है, हिंदू वर्ग की। FIR में क्या कुछ हिंदू लोगों के भी नाम है? जी बिल्कुल सही है आपका। इसमें करीब 4 से 5 ऐसी भी FIR हैं जिनमें हिंदू पक्ष के भी लोग हैं। इस तरह से कानून के लिए सभी बराबर होता है। The move was met with enormous criticism, and it has also come to light that a house constructed under the Pradhan Mantri Awas Yojana was also destroyed, prompting many to ask if due diligence was in fact done. The Madhya Pradesh administration has in the past used bulldozers against accused criminals. In March this year, allegedly illegal establishments belonging to individuals accused in a gang rape in Shivraj in the state were demolished. Later that month, another rape accused, in this instance a Mahant, was at the receiving end of such a demolition drive. What happened in Madhya Pradesh follows an example already set by the Yogi Adityanth-led administration in Uttar Pradesh. Between 2017 and 2021, the UP government seized or demolished property worth rupees 1,000 crores which were allegedly illegally acquired by accused gangsters. Almost half of these properties belong to 33 listed gangsters in the state of Uttar Pradesh, including Atiq Ahmed, Mukhtar Ansari, Surinder Bhatti, Anil Lujana, Badan Singh Badu, among others. You see, somehow the BJP feels that in UP, because they've got a mandate and they kind of use this symbolism to project a certain image, it doesn't mean that you circumvent the constitution or the rule of law or the mandatory requirements. I mean, no one is against illegal construction being demolished, but the way it's done, in way the court's orders were bypassed, I think it's a politically motivated stand. I think the whole world has seen it. So they're trying to divert the attention of people from price rise, unemployment, the kind of mismanagement the government has done. And these are very volatile issues. They catch media space, they catch mind space, and people tend to use this to divert the attention on main issues that are troubling the people in India. The BJP government nationally, to divert people's attention on various issues of price rise, of unemployment, of bad management of economy, they have been doing all these tactics, this sort of bulldozer politics. कुछ और लोग भी हैं हमारे रडार जिन पर हम काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो हमारा कंफर्मेशन होती जाएगी वो हम छोड़ेंगे उनको भी नहीं, लेकिन मैं ये जहर हरियाणा में बांटने नहीं। सर, जो उत्तर प्रदेश में हुआ, कई अपराधियों पर इसी तरह से कार्रवाई हुई, अपराध कम हुआ, क्या उसी तर्ज पर हरियाणा में भी अब बुलडोजर से ही मुहिम चलाई जा रही है कि उनकी संपत्तियों को इस तरह से नष्ट कर दिया जाए ताकि वो फिर दोबारा से उस काम को करने का सोचें? देखिए, ऐसा है, ये जो चरस गांजा अफीम या नारकोटिक्स का काम करते हैं ये प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, और अगर इनके प्रॉफिट पर ही सेंध लगा दी जाए तो फिर ये काम नहीं करते। The use of bulldozers to strike terror into the hearts of criminals and alleged criminals became a major poll issue in Uttar Pradesh, and Yogi Adityanth created history by becoming the first chief minister in Uttar Pradesh in 37 years to win a second consecutive term. But it's not as if this process has been without problems in UP as well. Earlier this year, the Supreme Court pulled up the UP government for sending 274 notices pertaining to attachment of properties to anti-CAA protesters prior to the enactment of the Uttar Pradesh Recovery of Damages to Public and Private Property Act 2020. It also ordered the government to refund any amount already claimed as compensation. The entire process would have to be reinitiated under the provisions of the Act that calls for the establishment of tribunals to adjudicate. The controversy around demolitions refused to die down. On the 16th of April, there was communal violence in Jahangirpuri in the national capital. On the 19th of April, bulldozers moved in. This drive was carried out by the North Delhi Municipal Corporation run by the BJP.
IUML, that is the Indian Union Muslim League MPs, have arrived over here at Jahangirpuri, and they are currently looking at the demolition that has been done by the municipal corporation over here, and they are visiting this particular spot. They're inspecting the entire area, and there you see the IUML MPs over here at Jahangirpuri. You are also going to meet the family members over here. What is the entire demand that you are looking forward? See, there are two things. Number one, it is illegal action on the part of the municipal corporation and the police also. We stand with the victims. We stand for justice. Even as the demolition operation was underway, a stay was being sought by the petitioners in the Supreme Court against this anti-encroachment drive. Officials on the ground denied this had anything to do with the riots. The Supreme Court issued a stay, but the demolitions continued for at least 2 hours after a stay order had been pronounced. कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद भी कई घंटों तक जो है कार्रवाई जो है एमसीडी के लोगों ने की है, और ये एक्सक्यूज दिया गया कि हमें जो है कम्युनिकेशन गैप था। हम ये कहना चाहते हैं, चीन जो है हमारे देश में क्षेत्र के अंदर घुस करके, हमारे देश की सीमा के अंदर घुस करके 2 गांव जो है वो बसा लेता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन जहां धर्म जात देख करके वहीं बुलडोजर जो है ये लोग चलाने का काम करते हैं। देखिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरी सुनवाई में उन लोगों को भी सख्त से सख्त सज़ा देगी जिन्होंने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होने दिया। 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है, उनकी ही अगुवाई में ये सारा इलीगल सेटलमेंट हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। पैसे खाते हैं भाजपा के पार्षद, पैसे खा के इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, और 15 साल से पैसे खा के उन्होंने दिल्ली के अनेकों हिस्सों में ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाया है। हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, उसको हम पूर्ण तौर से उसको मानेंगे। ऐसे ये कार्रवाई तो पहले भी होनी थी। यहाँ के जो लोग थे बहुत परेशान थे, क्योंकि जमीनों पे कब्जे हो रहे थे, निकलने में आने जाने में जो ट्रैफिक जाम हो रहा था, उसी जो चीज़ों को दूर करने के लिए हमने ये एक्शन लिया। ये देखने का अपना एंगल है, आप किस एंगल से देख रहे हैं, मगर हम तो जनता के हित के लिए हम हर एरिया में ऐसा काम करते हैं। आज भी जहांगीरपुरी उसी का एक पार्ट है। What made this anti-encroachment drive even more controversial was the fact that notices, as per one official, had not been issued. Several High Court and Supreme Court judgments over the years, while endorsing demolitions of illegal establishments, have emphasized the need to issue notices, particularly when those encroachments have lasted a significant length of time. However, the Delhi High Court in 2010 said in a case involving the NDMC, and I quote, "It is true that when an unauthorized construction is carried out by a party within its own premises without a sanctioned plan, in order to take action, the municipal authority has to serve a show cause notice. However, when unauthorized construction is carried out in public ways or open areas left for the public, no notice is required to be given by municipal authorities to remove such encroachment." As we can zoom in, we are on this side where you can see that this structure is being demolished by the MCD official. Let's go and talk to भैया, कब से थी दुकानें यहाँ पे? बहुत सालों से। 60 साल से पुरानी दुकान है सर। 60 साल से पुरानी दुकान थी, कोने पे पनवारी भैया की दुकान, ठीक है ना सर। एक बार में आकर के उन्होंने तोड़ दिया। आज से पहले वो आते थे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं था सर, कोई गैर कानूनी नहीं दिख रहा था। क्या आज ही दिख गया सबका सब सर? यहाँ पे सबका नौकरी रोजगार चला। एक जुलूस निकला, उसके बाद उसका नुक्स लेकर एक बंदे की गलती में सर पूरा एरिया चौपट कर दिया उन्होंने। एक बंदे की गलती में सर पूरा एरिया चौपट कर दिया उन्होंने। जुलूस के कारण ये पूरा मौका निकल के सारे। अभी तक बात है इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात थी। अब सर इससे पहले याद नहीं था कि इलीगल, जब बैठा रहे थे यहाँ पे तब कोई दिक्कत नहीं था क्या? जब उनके पास नोट जाते तब कोई दिक्कत नहीं था क्या? एक तरफा सर दिखाई दे रहे हैं सर, एक तरफा दिखाई दे रहे हैं सर। तोड़ो ना, सबको तोड़ दो ना सर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो आ चुका है ना सर, उसके बाद क्यों तोड़े जा रहे हैं ये बता दो मेरे को। ऊपर है क्या सुप्रीम कोर्ट से एमसीडी? जब रेसिडेंट्स आ गए, लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, लेकिन एजेंसी को नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि रोक दो, फिर क्यों रोकने के बाद फिर क्यों तोड़ा जा रहा है?
जानबूझ के तोड़े जा रहे हैं सर। क्या हम लोग गुनहगार हैं या हम लोग कहती हैं? कौन लोग थे जिन्होंने लड़ाई की? यहाँ पे दोनों तरफ से पत्थरबाजी चली, आपका इलाका बदनाम हुआ। आपको नहीं लगता है कि नागरिक होने के नाते आप लोगों को रोकना चाहिए था उस समय? अगर आप 16 की वो एक जुलूस लेकर के जा रहा था, जुलूस के कारण में उसके बाद जो है उसके हम लोग भूखे मर जाएंगे। हम लोग सारे भाई, हम लोग हिंदू मुसलमान से इकट्ठा रहते सर। एक घर हिंदू का, एक घर मुसलमान का, एक घर हिंदू का, सारे लोग इकट्ठा रहते, सारे सब त्योहार बनता है सर, सब त्योहार बनाता है। एक रूल से आज पूरा चौपट हो चुका है पूरा एरिया सर आज तक में। These residents are grilled, the gates are locked, and suddenly they are not allowed to come outside, and their shops and the outer structure of this shop is being demolished. The residents are aware. The people, normal people who are standing here are aware that what has been the order from the apex court, but there's no, order which has come to the MCD and the officials, and certainly the Delhi police is also giving the protection. When we were talking to the senior officials, they said that this thing will continue till the time they get the order. In fact, the MCD commissioner stated that we will have to see that whether it's for the temporary structure or for the permanent structure. मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आप कोई भी हो, कानून में ये अनिवार्य है कि आपका घर गिराने से पहले आपको नोटिस दिया जाएगा। जिस दिन आप ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी धर्म और जाति के आधार पर मापदंड पैदा कर देंगे, ये देखने लगेंगे कि अमुक व्यक्ति हिंदू है, अमुक व्यक्ति सिख है, अमुक व्यक्ति मुसलमान या ईसाई है, अमुक व्यक्ति अमुक जाति से है, अमुक व्यक्ति दलित है, अमुक व्यक्ति बैकवर्ड है। अगर इस आधार पे बुलडोजर चलेगा तो माफ कीजिए, ये देश चल नहीं पाएगा। In 1996, the Supreme Court in the Ahmedabad Municipal Corporation versus Nawab Khan Gullab Khan case had said, and I quote, "On the other hand, if the corporation allows settlement of encroachers for a long time for reasons best known to them and reasons are not far to see, then necessarily a modicum of reasonable notice for removal, say 2 weeks or 10 days, and personal service on the encroachers or substituted service by fixing notice on the property is necessary." There was a big political standoff on the actions taken in Jahangirpuri. Jahangirpuri has a large number of blocks. C block is the block where the majority happen to be Muslims who are Bengali speaking. In other words, they are Bengali Muslims. Hindu shopkeepers, I hate to use the word Muslim Hindu, but just to make a point, they said yesterday to our teams that here's my shop, it's been demolished because it's next to a Muslim shop in C block. But my brother or my relative who's living in H block or G block who has a similar shed, they have not demolished. That is selective. They selected a block and they destroyed houses, they destroyed sheds. On a day when the administration and the MCD is taking strong action against illegal encroachments, why is it that some political parties are trying to give this a communal spin, are trying to divide this action on illegal encroachments into Hindu-Muslim? And the Congress party and Rahul Gandhi, who are speaking today, should tell us that till date no action has been taken against the main accused in Karoli, Matlub Ahmed, who's absconding for more than 2 weeks. But when action is taken against antisocial elements, against illegalities, rioters in Jahangirpuri, in Khambat in Gujarat, in Khargon, strong action is taken, then the Congress party starts communalizing this action on the basis of Hindu-Muslim. The fact that normally what governments do, they use law to bring order. Now, where is the law which permits you to just accuse anybody of rioting and then going and taking a bulldozer and razing his or her property? Whether it was when Mr. Gupta or Mr. Jha or Mr. Hassan, doesn't matter. Fact of the matter is, this is beyond your legal purview to do what you did. On the 17th of April, a demolition drive was carried out by the municipal administration in Congress-ruled Rajasthan. A 300-year-old Shiva temple was demolished during this drive and there was widespread condemnation. ये हमारा 300 साल पुराना हमारा बुजुर्गों का मंदिर था, इसको तहस-नहस किया गया और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमको हमारा न्याय दिलाया जाए। 200 साल पुरानी जो मूर्ति इनको भगा दी है, ये तरीका वाली बात है क्या?
है। कम से कम इनका सोचता सही कितना पुराना ये मंदिर है। आस्था का ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, ये हिंदुस्तान है, इसमें मंदिर मस्जिदें पहले रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मंदिरों का कोई वो नहीं है। हिंदुस्तान के लोग क्यों? राजनीति क्या है? ये राजनीति है एक तरीके से, ये दबंगई है। कौन कर रहा है? ये एचएम की दबंगई है। यहाँ की जो मुख्य वो क्या है, यहाँ का एमएलए वो दबंगई करके इसको तोड़ दिया गया है। 300 बरस पर राजगढ़ की स्थापना हुई, उस समय का ये मंदिर है, तो ये अतिक्रमण में है ही नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने पुजारी श्री प्रवीण कुमार जी को मतलब जबरदस्ती यहाँ से भगा दिया गया और बेरहमी से मूर्तियाँ वगैरह मंदिर को तोड़ा गया। The ruling dispensation blamed the decision on the municipal board of Rajgarh in Alwar, which is dominated by the BJP. The BJP in turn blamed the local MLA, who is a congressman. Subsequently, the state government suspended some local officials. The jury is out on who exactly was responsible, but the temple apart, several establishments were also razed. जो राजगढ़ नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया, वहां पर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड और उसके अध्यक्ष सतीश जी दुहारिया की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक दिनांक 8/9/2021 को हुई, जिसमें ये अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। मुझे लगता है कि सरकार ने इस मसले को ठीक से डील नहीं किया। सरकार की नीयत खराब थी। सरकार विधायक के इशारे पर धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाना चाह रही थी, नगर के कस्बे के लोगों में भय पैदा करना चाह रही थी और इस कारण ये घटना हुई है। मुझे लगता है हमारी एक डेलीगेशन अभी 1-2 दिन में जाएगा, पूरी घटना की तथ्यपरक जांच करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल पहली घटना नहीं है। सरकार, राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस तरीके की सीक्वेंस से घटनाएं हुई हैं जो अपीजमेंट को और साबित करती हैं। करौली की ताजा घटना इस बात का प्रमाण है। मंदिर शिव जी का वो कैसे धराशायी? This has not been the first time that places of worship have been demolished as part of an anti-encroachment drive. This has happened across states and even endorsed by the courts when the concerned establishment has been constructed illegally. But there is a deeper problem here of the legal constructions in general and how they are allowed to proliferate many a time with the complicity of the local administration. It is therefore that the demolitions that are subsequently undertaken are treated with suspicion. The SDMC in the national capital has recently undertaken a survey to locate illegal structures in different parts of its jurisdiction, including reportedly Shaheen Bagh, which was the epicenter of the anti-CAA protests. The bulldozers, it seems, from what has transpired over the last few days, are here to stay.